You know how irritating it is when your skin barrier is damaged, red, itchy, and it's always angry? What if I tell you there is a product that can instantly soothe your irritation without clogging your pores? Hey everyone, welcome back to the channel where we talk about skincare and consistency, because skincare is not an overnight thing, it is a journey. And if you have been following me since last couple of months, you know I have been raving about this one in multiple of my videos, be it on Instagram Reels or YouTube Shorts. But in today's video, I'm going to give you full breakdown like why I call this one a savior or a magic in a jar. This is Dr. Jart+Ca Cicapair Soothing Gel Cream. This cream claims to repair your skin barrier by 65% in just 1 hour and reduce the visible redness by 18% in 2 weeks. And trust me, the states doesn't do justice like how effective this one when it comes to irritation and soothe the redness. But before I show you the real results, the texture, the benefits and the ingredients of this one, I would like to request you to hit the subscribe button and press the notification bell so you never miss any of my videos, because I know 86% of you who are watching still have not subscribed to my channel. So kindly do that first, and now let's get into it. This cream is powered by some really smart ingredients. I'll break that down for you. Number one, this contains Cica 2 complex, which is of course Centella asiatica, and we all know that Centella asiatica is a powerhouse when it comes to soothe the irritation and calm the skin down. This one helps to reduce redness, irritation and inflammation. Perfect for sensitive or compromised skin barrier. Number two, this contains R protector. This one is very interesting. While Dr. Jart doesn't fully disclose every component of R protector, this one is designed to reduce external irritation and strengthen your skin resistance against environmental aggressors. Think of it like a smart shield for your skin. Number three, this contains niacinamide, which is of course a multitasker that not only strengthens the skin barrier but also improve uneven skin tone and brightens the dullness over time. Next, this contains panthenol, which is vitamin B5, will deeply hydrate and soothe, also helps to support skin regeneration and helps to lock in the moisture, making it perfect for inflamed, dry or sensitive skin. And lastly, we have the glycerin, which will help to pull out the water into the skin, instantly boost the hydration and plumping the skin. What an amazing combination of the ingredients, all the right ingredients which will help to soothe and calm the skin all in one jar. Now coming to the texture of this one, this is a soothing jelly cream that feels cooling and lightweight when applied. Initially it may feel a bit rich, but it spreads beautifully and absorbs without leaving any greasy residue. It gives you a very nice dewy and calm finish to the skin and layer well under your makeup and sunscreen. It is non-sticky, doesn't peel, and most importantly it doesn't clog your pores. A big win if you are prone to comedons or acne like me. I have shared my personal experience in this reel and this short where I have said like it is a magical cream. Now why I say it's a magical cream, because whenever I have tested this one, this has not disappointed me. I have tested it after shave. Like whenever you shave, you know आपको बहुत ज़्यादा ऐसे redness, कहीं पे irritation और burning sensation feel होती है. Just apply this one right after half an hour. That redness will be gone by 87%, 90% redness gone. The warm feeling, the warm sensation, that heat you feel instantly gone, like within half an hour. Like I have shared this video, इसमें within half an hour के अंदर मेरा सारा irritation इसने ठीक कर दिया. Even this one is perfect after sunburn. Now obviously अभी summers आ गई हैं. Like if you person who get sunburns easily, just apply this one after you reach home. This will instantly soothe your skin. What else you can do is you can keep this one in your refrigerator. जब आप आ रहे हो, जब लगाओ, और you will feel like oh wow, instantly soothe आपके skin को कर देता है. Third, मैंने इसको use किया है after the peel. Like whenever I do the 30% peel और जब भी मुझे irritation होता है, I apply this one because now I know this is my savior. Now why I love this one so much, because this one works kind of a similar, I would say better than that one, but I'm just giving you just an example. Like if you have seen my videos on a clear midnight blue calming cream, and you know how much I was raving about that moisturizer back in like 2-3 years back.
बट वाई आई हैवंट रीपरचेज दैट वन, द ओनली एंड ओनली बिकॉज कि उसका जो फॉर्मुलेशन है दैट वन इज नॉट सूटेबल फॉर कॉमेडॉन प्रोन पर्सन और इफ़ यू आर एक्ने प्रोन, बिकॉज उसके अंदर काफ़ी सारे ऑयल्स हैं, उसके अंदर शिया बटर भी है, बट येस दैट डू हैव ग्वाजलिन जो ब्लू टिंट है उसके अंदर, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट इंग्रेडिएंट दैट इज़ वेरी वेरी सूदिंग एंड कामिंग ऑन द स्किन. सो वो एक मैजिक क्रीम थी मेरे लिए. जब भी मुझे रेडनेस होता था आई यूज टू अप्लाई दैट मॉइस्चराइजर और इंस्टेंटली उस रेडनेस को, बर्निंग सेंसेशन को काम डाउन कर देती थी. तो मन करता था कि उसको पूरे फेस पे लगाओ बिकॉज माई स्किन इज इरिटेटेड, मुझे बहुत जल्दी इरिटेशन हो जाती है. सो आउट ऑफ नो वेयर, लाइक आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, लाइक आउट ऑफ नो वेयर, लाइक अब कभी अगर मान के चलो बाहर खड़े हो गए, मिट्टी फेस पे चली गई तो उससे भी ईचिंग होनी शुरू हो जाएगी, या गंदे हाथ लगे तो ईचिंग होनी शुरू हो जाएगी, लाइक आउट ऑफ नो वेयर. लाइक दैट व्हाट दे मेंट बाय द एक्सटर्नल एग्रेसर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स. लाइक पता नहीं चलता कि किस चीज़ से वो इरिटेशन ट्रिगर हुई है. सो दिस वन हेल्प्स टू सूद दैट, लाइक आपकी स्किन के ये बैरियर को स्ट्रेंथन करता है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इसको रेगुलर मॉइस्चराइजर की तरह यूज़ नहीं किया है बिकॉज ऑफ कोर्स दिस वन इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव. लाइक दिस वन इज़ फॉर 3000 रुपीज़ एंड आई गॉट इट ऑन डिस्काउंट फॉर आई थिंक 2700 रुपीज़, विच इज़ अगेन नॉट एट ऑल cheap. But yes, I have kept it as a treatment. Like whenever I get irritation, I will use this one. This will instantly soothe the irritation and it won't clog the pore. अब वहाँ पे इशू होता था कि आप उसको पूरे फेस पे नहीं लगा सकते हो. वो इरिटेशन तो ठीक कर देता था बट देन आपको वाइट हेड्स और कॉमेडॉन्स और एक्ने निकल जाते थे. तो वो तो ऐसा होगा कि आप एक चीज़ ठीक कर रहे हो और दूसरी चीज़ दोबारा आपकी ख़राब हो गई. बट हेयर इन दिस वन it won't clog your pores, it won't give you the white hairs, like it has that very very nice, like एक ऐसा मॉइस्चराइजर सीका क्रीम है कितने टाइम से यहाँ पे चिल्ला रही हूँ कि कोई तो ऐसा मॉइस्चराइजर लाओ, कोई तो ऐसी सीका क्रीम लाओ जो हम जैसे कॉमेडॉन प्रोन पीपल भी यूज़ कर सके. Yeah, they have it. Like yes, I have it now. Like it's a beautiful calming cream, but yes, I know it's very expensive. और बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे थे कि इसका कुछ अफोर्डेबल बताओ. भाई अगर अफोर्डेबल मिल गया होता तो मैं खुद नहीं उसको ले लेती. बट yes, I will search for it. I will try to find it. अगर कुछ भी मुझे इससे मिलता जुलता या इसके आसपास का कुछ मुझे मिलेगा, I would definitely try that one out for you guys. और obviously मुझे भी चाहिए तो obviously अगर मेरे पे सूट कर गया तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगी. But this one is beautiful, I would say, hands down. Like this one is a total worth it product. Like you guys know, I always say when I pay this much I expect more. So whatever you're paying for this moisturizer, it's worth it. Just go for it if you can afford this one. बट अगर अंडर बजट हो तो मेरे भाई अभी तो मेरे पास ऐसी ऑप्शंस नहीं है जो बिल्कुल इमीडिएटली काम डाउन कर दे. बट हाँ, अगर आपका कॉमेडॉन प्रोन स्किन नहीं है देन आप क्लियर्स मिडनाइट ब्लू कामिंग क्रीम की तरफ भी जा सकते हो. बट इफ़ यू आर प्रोन टू कॉमेडॉन, दिस इज़ द ओनली मॉइस्चराइजर आई हैव फाउंड टिल नाउ. बट इफ़ यू नो एनी मॉइस्चराइजर जो इसके जैसा काम करता है, लेट मी नो इन दी कॉमेंट्स. आई वुड ट्राई इट फॉर यू गाइज एंड कम अप विद अ वीडियो. बट येस, दिस वन इज़ ब्यूटीफुल. आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. चेक कर लेना, मैंने इसको नाइका से लिया है. सो यू कैन लुक आउट फॉर सेल. सो आपको ये मैक्स टू मैक्स 2700 रुपीज़ तक का पड़ जाएगा. बट येस, इट्स वर्थ एवरी सिंगल पेनी. नाउ यू नो वाई आई कॉल इट अ मैजिक इन अ tub. This is definitely my holy grail and magic in a tub. Beautiful. That was it about this video. I hope you found it helpful. If you do, don't forget to hit like, share, subscribe, press the notification bell so you never miss upcoming videos. I'm going to see you in my next. Until then, take care.